हेलो फ्रेंड्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग 2013 का क्वेश्चन किया था। 2013 में दो वीडियो बनाया था हम लोगों ने, 1 to 10 ऑब्जेक्टिव और 11 to 20 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और हम लोग 2012 का क्वेश्चन करेंगे। 2005 से लेकर 2012 तक का पैटर्न सेम था। 2005 से लेकर 2012 तक का पैटर्न सेम था। उसमें 15 ऑब्जेक्टिव होता था और 10 सब्जेक्टिव होता था। 15 ऑब्जेक्टिव 6 मार्क्स का, मतलब 15 गुने 6 90, और 10 सब्जेक्टिव 21 मार्क्स का, 21 गुने 10 210। सो 210 सब्जेक्टिव, 90 नंबर ऑब्जेक्टिव, और टोटल मिला के 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्टिव वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे जैम के बाद करवा देंगे आपको हम। ठीक है, जो अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट करते हैं। 1 to 15 जो क्वेश्चन है, 2012, 10, 11, 10 ऐसे करके 5 तक हम लोग को पहुँचना है। तो कोशिश रहेगा कि 2012 और मतलब हर दिन 2 से 3 साल का 3 साल का पेपर डाल देंगे, तो 2-3 दिन में ओवर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन 1 to 15 IIT जैम 2012 ऑब्जेक्टिव पार्ट ओनली। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव पार्ट इस वीडियो में करेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू पेपर। सी दिस क्वेश्चन नंबर 1 जैम 2012 जैम 2012 कर रहे हैं। ठीक है, यही है ना जी, जैम 2012। यस, ओके, सो वी आर इनटू जैम 2012। ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गिवन द फंक्शन एफ एक्स टी ऑफ बोथ एक्स एंड टी, द वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ डॉट विथ एक्स डॉट इज। एफ जो है इट इज फंक्शन ऑफ both x and t, so what will be df? df will be, फार्मूला तो यही है ना, पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे लिखा जाएगा, राइट, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो df by dt would be what? Plus, right, so this will be what? F dot, and this is x dot. So the partial derivative of f dot with x dot is going to be, ये हो जाएगा ना, partial derivative of f dot with x dot is going to be df by dx. B would be the correct answer. B would be the correct answer. समझ में आ रहा है जी? क्लियर है? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में दिख ही रहा है आप लोगों को। चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, f is constant vector, r is position vector, then the gradient of f dot r is, f जो है तुम्हारा constant vector है, so let's assume f to be what? f1 i cap, constant vector है तो of course f1 f2 f3 they all will be constant. Vector constant है मतलब उसके component constant है। So f dot r क्या हो जाएगा? r vector is what? xi cap plus yj cap plus zk cap, तो ये आ जाएगा f1x f2y f3z, right? So the gradient of f dot r will be, sorry, तो डाइवर्जेंस लिख दिया, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट r स्केलर हो गया ना। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज i कैप j कैप k कैप, yes, so this would be f1 i cap or this will be f vector. So
P would be the correct answer. B would be the correct answer. Clear है? Is it clear? थर्ड क्वेश्चन देखिए. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है. 3 masses m, 2m, 3m are moving in xy plane with speed 3u, 2u and u respectively as shown in figure. The 3 masses collide at the same time at point P and stick together. Then the velocity of resulting mass would be, when the 3 masses will stick together, the combined mass would be what? Sorry, combined mass would be m plus 2m plus 3 is 6m. And even if the collision is inelastic, the linear momentum can always be conserved. Linear momentum हमेशा ही conserve रहेगा. ठीक है. So I'll just find linear momentum of these 3 masses before collision should be equal to linear momentum of the combined mass after collision. So what is linear momentum of these masses before collision? अगर इसकी बात करें तो what is linear momentum? Linear momentum would be m into 3u I cap. इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा, this is 60 degree, this is 60 degree, so this is 2m into 2u cos theta cos 60 minus I cap, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, and 2u sin 60 minus j cap, is it not? So this will be, if I take 2u outside, 4mu, and cos 60 degree will be 1 by 2 and sin 60 will be root 3 by 2. So this will be 2mu minus I cap, right? Okay, अगर इसकी बात करें हम लोग, this is 60 degree, so momentum here will be 3mu cos 60 minus I cap plus u sin 60, this, or this will be 3mu cos 60 is 1 by 2 and sin 60 is, that's right. So this will be, okay, 3mu by 2 minus I cap. So let's call it P1, right? And this is P2 and this is P3. So P1 plus P2 plus P3 would be equal to 6m into V vector, linear momentum after collision. तो इसको ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा, 3mu I cap, P2 is 2mu minus I cap minus 3j cap, sorry, ठीक है, and here we have 3mu upon 2 minus I cap, right, and this equals to 6mv. So m will cancel out, sorry, m cancel हो जाएगा, और इधर क्या आ रहा है, 3u minus 2u is 3u minus 2u is u, and u minus 3u by 2 will be minus u by 2. और j वेक्टर वाला में देखो, ये क्या आ जाएगा, minus 2 root 3
माइनस 2√3 एंड प्लस -2√3, इधर क्या आ रहा है प्लस 3√3/2. So this will be 1 by this minus 1/2 equals to 6b. So v vector would be simply minus 1/12 this. I think this is correct. ये आंसर जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर. ठीक है, डी आपका सही आंसर बन जाएगा. ठीक है, सिंपल है. ये देखो क्वेश्चन. The figure shows thin square sheet of metal of uniform density along possible choices for a set of principal axes of the moment of inertia lying in the plane sheet. The correct choice for principal axis would be. देखिए, principal axis का मतलब है कि the product of inertia should be 0. प्रिंसिपल एक्सेस का मतलब ये है, और देखो तीनों ही मासेस जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो ऑफकोर्स आई वाई जेड ये सब तो जीरो ही होगा. आई वाई जेड इक्वल टू आई जेड वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई जेड डी एम. सो जेड इज जीरो फॉर द होल मास डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मान लो एक्स वाई प्लेन ले लें हम लोग, इफ आई टेक टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान के चल रहे हैं कि ये पूरा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स वाई प्लेन में है. सिमिलरली आई एक्स जेड एंड आई जेड एक्स विल ऑल्सो बी जीरो बिकॉज दिस इज एंड जेड देयर इज नो मास डिस्ट्रीब्यूशन इन जेड, सो जेड इज जीरो फॉर द होल मास डिस्ट्रीब्यूशन. द ओनली थिंग which can be there is आई एक्स वाई एंड आई वाई एक्स which are equal of course. ठीक है, अब देखना यह है कि इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या जरूरी है. प्रिंसिपल एक्सिस के लिए जरूरी है कि ये सारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो. तो हम लोग को देखना है कि इन तीनों में से किस केस में ये आई एक्स वाई और आई वाई एक्स जीरो होगा. सो दिस कैन रिटर्न एज व्हाट, एक्स वाई सिग्मा डी एस. और मान के चल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्स वाई प्लेन में है. सो इन दैट केस यार डी एस विल बी डी एक्स डी वाई. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझो, यू हैव द डबल इंटीग्रेशन. दिस इज ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज ऑड फंक्शन ऑफ वाई. सो दिस विल बी जीरो इफ द लिमिट ऑफ एक्स इज माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग and limit of y is also minus something to plus something, because we know this is twice of and is zero. तो यहाँ पे x और y तो दे आर ऑड फंक्शन ऑफ x एंड y. तो x का लिमिट अगर माइनस ए टू प्लस ए टाइप का चीज हो या माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग हो, एंड y का लिमिट माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग हो, तो उस केस में यूजिंग दिस आई कैन से द इंटीग्रल विल गो टू जीरो. तो आप एक चीज समझो, आप जैसे अगर ये केस लेते हैं आप, तो अगर मान लो सपोज को दिस इज दे हैव नॉट गिवन साइज. ओके, सपोज दिस इज a, right? This is a by 2, this is minus a by 2, this is plus a by 2, this is minus a by 2. So in this case, limit of x will be what? Minus a by 2 to plus a by 2. And y will also be minus a by 2 to plus a by 2. So for this case, your ixy and iyx would be 0, of course. ठीक है, जहाँ पे सिमेट्रिकल हो, मतलब जहाँ पे आपका एक्सिस के अबाउट मास डिस्टेंस सिमेट्रिकल होगा, वहां पे आपका जो मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस,
And if somebody want the limit of x can be given as what? I'll write this line as x of some function of y and x of some function of y. So this limit of x in this case will also be minus of something to plus of something. So for this case also would be 0. But here in this case you won't have such a case. मान लो this is x and y. So in this case the limit of x will be 0 to a and limit of y will also be 0 to a, and this will be non-zero. So I can say P and Q are the principal axes, because principal axes are for the axis to be principal axis, your product of inertia term about those axes should be 0. So P and Q is correct answer. The correct choice of principal axis is P and Q. R is not a principal axis. R जो है principal axis नहीं है. R is not a principal axis. All right. Okay, so I think we have done question of 4 ना. 3 इधर कर लिया था. ठीक. Question of 5 देखिए क्या बोल रहा है. A highly damped harmonic oscillator loses energy at the rate 1% per minute. The decrease in amplitude of oscillator per minute would be. देखिए damp oscillator में the amplitude decays like this and the energy decays like this, right? Energy proportional to energy is proportional to a square, so that's why the decay is like this. So energy decay at the rate of 1% per minute. देखिए अगर हम कहें dE या log E ले लें, if I take log E, so this will be, this is log E. If I want the percentage decay, and this is 2RT. So if I take derivative, this will be dE by E, so it will be 0 and this is 2R. I'm taking derivative on both sides, right? Look, it's something like this, see. It's 1 by E dE by dt, right, is 0 and 2R. So I can say this is losing energy at the rate 1% per minute. So I think this is sorry. So this is equal to minus 2R. And in the same way, if I apply it here, this is 1 by A dA by dt. Minus R. So you see the rate at which this is d by dE by E is fraction of energy which is lost per second. This is fraction of energy lost per second. dE by E is fraction of energy lost per second, and it's a fraction of amplitude lost per second. So you see, if this is 1%, then this will be 0.5%, right? Because the fraction of energy lost per second is half of that of energy. Amplitude का केस में it is minus R, there it is minus 2R. So if it is 1%, in case of amplitude it would be 0.5%. It would be 0.5%. All right. ठीक है ना. परसेंटेज पर मिनट है ना, तो यहाँ से आपको ये इसमें 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज निकलेगा. अब पर मिनट अपॉन टाइम करेंगे तो पर मिनट आ जाएगा. परसेंटेज पर मिनट इज डी बाई डी 1 बाई डी बाई डी टी, राइट. ओके, ठीक है.
छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. A parallel plate air gap capacitor is made up of two plates of area 10 centimeters square, each kept at distance of 0.8 millimeter. A sine wave of amplitude 10 volt and frequency 50 hertz is applied across capacitor as shown in figure. The amplitude of displacement current density is. एक चीज समझो. See, whatever conduction current you have over here, same conduction current, same value of displacement current you will have over here and same value of देखो जो यहाँ conduction current है वही capacitor के बीच में it is the conduction current before capacitor plate will be equal to displacement current within capacitor, and the current, see, it is current, and current is in the form of conduction current in the wires, and the same current will be in the form of displacement current between capacitor, right? And again after that you will have conduction current. So you know IC is always equal to ID, except when you have some dielectric which is poorly conducting. When you have a dielectric which is poorly conducting, then in that case you have some conduction current over here also. So in that case this conduction current will be equal to conduction current over here plus displacement current over here. But in case of parallel plate capacitor, without any dielectric, without any poorly conducting medium, or without any, of course you cannot have conducting medium, otherwise capacitor will lose its significance. You may have sometimes poorly conducting material, so you may have some leakage current flowing from here to here through dielectric. So in that case that leakage current will be IC, and you have conduction current, so displacement current. So in that case IC over here will be equal to IC over here plus ID over here, right? But here you don't have such a case, so IC in these wires will be same as ID within the capacitor. Okay, so what is ID? ID is IC, and IC is what? Is dq by dt. And Q is what? It is CV. And V is what? C will come out. So what is voltage? Voltage बोल रखा है कि ये साइन वेव है 10 sin omega t, something of this kind. Omega is 2 pi f, where f is 50 hertz, or you can say 10 sin 2 pi f t, and f is 50 hertz, so this will be 100 t. Sorry. So f is 50. So if I take dV by dt, so it will be 1000 so this is epsilon naught A by D, and dV by dt is what? 1000 pi cos but they want displacement and density, so it will be ID upon area, that will be JD. So you say epsilon naught D 1000 pi so they want the amplitude of displacement current density, so amplitude will be this. So epsilon naught is 8.85 into 1000, and pi is what? 3.14, and D is 0.88. So I think this will be also 10, right? और क्या किसमें मिली एम्पेयर में चाहिए ना आपको, सो मिली एम्पेयर, ठीक है. So this will be 10 to the power 3.14 into 10 to the power minus 8.
या मिली एम्पियर, yeah, so this is in terms of milliampere, it would be what? C, yes, epsilon नॉट a by d, अच्छा मिलीमीटर में, ओके तो क्या कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है इसमें, मिलीमीटर में भाई, ठीक है। सो एक और इसमें 5 और 3 घटा दो, 3 -5, सो दिस इज इन एम्पियर राइट, ये तो कट ही गया है। तो मिली एम्पियर में क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 10 से पावर 0.03 राइट, 0.03314 कर सकते हो। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर, 0.03 मिली एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा चेक करना, yes, I think it is correct, ठीक है। so you understand this part, conduction current and displacement का, ये पहले भी एक किसी साल का पेपर कर रहा था उसमें आया था, उसमें मैंने बताया भी था। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए टाइनी डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1.4 into 10⁻11 kg is floating in air at 300 Kelvin. Its RMS speed in micrometer per second will be, PRMS क्या होता है? If I take it as ideal gas, it is 3 kT by m. Most fair velocity is 2 kT by m. Average velocity is 8 kT by pi m. So याद रखिए। So K is 1.38 into 10 to the power minus 23, R by N होता है, ठीक है। R is 8.314 and NO is 6.023 into 10 to the power 23. Okay. Temperature is 300 Kelvin. Mass is, ठीक है, ये आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। So this will be under root 3 into 1.38 into 3 1.4 into 10 to the power -12 नहीं -10, -12 -10, तो ये ऑलमोस्ट बराबर है, इसको काट दो। So it is 3 into 10 to the power -5 meter per second, or I can say this is 30 micrometer per second. C will be the correct answer, C आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा भी सही है, C will be the correct answer. I think there is no problem, सब easy जो क्वेश्चन है ना, फार्मूला बेस्ड है बिल्कुल। कौन सा क्वेश्चन किया हम लोग, हाँ ठीक है। ये देखिए, when the temperature of black body is doubled, the maximum value of spectral energy density with respect to initial temperature would become, देखिए spectral energy density is given by this, तो टेम्परेचर डबल करोगे तो U becomes what, 2 to the power 4 times, तो 16 times, simple question है। The spectral energy density will become 16 times, spectral energy density will become 16 times, ठीक है, जब डबल करेंगे
तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग प्रीटी फास्ट राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। लाइट टेक्स 4 hours to cover distance from sun to Neptune. If you travel in a spaceship at a speed of 0.99 c, c is the speed of light in vacuum, the time required to cover the same distance measured with clock on the spaceship will be okay. लाइट को सन से नेपच्यून तक जाने में 4 घंटा लग रहा है। सन से नेपच्यून तक जाने में 4 घंटा लग रहा है, यानी इसका दूरी क्या होगा? लैब फ्रेम में मान लो ऑब्जर्वर है, इसका दूरी क्या होगा जी? 4 घंटा इंटू सी, 4c लाइट आवर्स। लाइट ईयर्स होता है, लाइट आवर्स बोल सकते हैं हम लोग, नहीं। So this is the distance. This is the distance. Now you are in a spaceship, right? You are in a spaceship. Spaceship, SS, spaceship, which is traveling at a distance of say 0.99 c. So if you are in the spaceship, दिस लेंथ, ये पूरा का पूरा आप स्पेसशिप को कभी भी चलते हुए नहीं देखेंगे। जब आप स्पेसशिप के अंदर होते हैं तो स्पेसशिप का सारा मोशन को इनहेरिट करते हैं, और चूंकि इसके सारे मोशन को इनहेरिट करते हैं इसलिए आप कभी भी स्पेसशिप को मूविंग नहीं पाएंगे। जैसे अर्थ पे हम लोग, अर्थ रोटेट्स बाई 2 पाई रेडियन इन 24 आवर्स, एक चक्कर लगा लेता है अपने एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स में, और अर्थ रिवॉल्व भी कर रहा है सन के अराउंड। देखिए हम लोग अर्थ पे रह के कभी भी अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हम लोग उस मोशन को इनहेरिट कर रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वर अपने फ्रेम का मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, एक अचरज सत्य है। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जर्वर हमेशा अपने फ्रेम के मोशन को इनहेरिट करता है, और चूंकि वो उस फ्रेम के मोशन को इनहेरिट करता है इसलिए वो कभी भी फ्रेम को मूव ही नहीं पाता है। जैसे आप ट्रेन में होते हैं, आप ट्रेन के अंदर होते हैं, कभी भी ट्रेन को मोशन में नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि आप ट्रेन का सारा मोशन को इनहेरिट करते हैं। तो पता लगाने के लिए क्या करते हैं आप खिड़की से बाहर झांकते हैं, देखते कहीं कोई पेड़ तो नहीं चल रहा है, कोई घर तो नहीं चल रहा है। तो घर चल रहा है तो इसका मतलब कि ट्रेन चल रहा होगा, घर नहीं चल सकता है, लेकिन आप कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यू सी द होल वर्ल्ड मूविंग बट यू वॉन्ट सी ट्रेन मूविंग। तो स्पेसशिप के अंदर जब बंदा रहेगा, ऑब्जर्वर रहेगा, तो ये पूरा सिस्टम को ना, ये एक तरह से स्केल ऑफ 4c लाइट आवर्स उसको इस डायरेक्शन में 0.99 c से मूव करता हुआ देखेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है वो इट विल अंडरगो ए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। 4c लाइट आवर्स है, सो द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन विल बी व्हाट? 0.99 होल स्क्वायर। दिस विल बी द लेंथ observed by observer on the spaceship, and this has to be covered. So how much time it takes to cover this distance? That will be your time. ये आवर में आएगा, ध्यान देना, क्योंकि लाइट आवर्स में है। ठीक है, तो आंसर जो है ना वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो आवर में आंसर आएगा। ठीक है, ओके, यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये जो लेंथ है ना वो स्पेसशिप में रह के कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ही विल सी इट टू बी दिस लेंथ, and upon so this distance upon the speed of spaceship, which is 0.99 c, will be the what will be the time taken to cover the same distance with the clock on the spaceship. Of course clock on the spaceship, the spaceship का observer जो measure कर रहा है वो time। ठीक है, so it will be 4 into let me calculate it. So 1 minus 0.99 का होल स्क्वायर इंटू 4 भागा
Okay. So it says just a minute, फिर से करना पड़ेगा. अंडर 1 माइनस 0.99 का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू 4 अब आगा मिनट में आंसर पूछेगा. ठीक है, तो ये हमारा 0.5699 आवर्स आ गया. इसको 60 से गुना कर दिया जाए तो ये मिनट में आ जाएगा 34.2 मिनट. ओके, ठीक है. ऑलराइट, ये आ जाएगा आंसर. नौवां क्वेश्चन किया ना लोग. हाँ, 10वां क्वेश्चन. ये देखिए क्या बोल रहा है. कोबाल्ट 60 हैज रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ऑफ हाफ लाइफ 2 ln 2 10⁸ सेकेंड. हाफ लाइफ है. Activity of cobalt, 10 gram of cobalt in disintegration per second is, see, activity is given by what? Activity is dA by dt. Sorry, activity is dN by dt, right? That's equal to lambda n, right? So lambda is log 2 by half life, and n is number of cobalt atoms at the time when you are calculating activity. So number of cobalt atom, let's calculate that also. So log 2 and half life is what? 2 ln 2 into 10 to the power 8 second. And the number of cobalt atom will be how much? You have 10 gram of cobalt. So how many moles of cobalt? 10 upon 60. Atomic mass divide kar denge. So this is number of moles of cobalt you have. And in 1 mole, you have these many atoms. Right? So this will all cancel out. So this cancels out. Approximately मान लो इसको भी cancel कर देते हैं. तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 into, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 15 8 23 होता है. So this will be what? 5 into 10 to the power 14. ये एक्टिविटी हो जाएगा. D will be the correct answer. D आपका सही आंसर आ जाएगा. ठीक है. We have done this 10 questions. 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं. ये 1 साल का पूरा हो जाएगा. ग्यारहवां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. सॉरी, ये देखिए 11th question. An X-ray beam of wavelength 1.54 angstrom is diffracted from 110 plane with a solid with a cubic lattice of lattice constant 3.08. First Bragg's diffraction occurs at, Bragg's law का क्या expression है जी? 2DHKL sin theta equals to lambda. नहीं, equal to lambda. अब DHKL क्या है? The distance between two lattice planes is A upon, so A is here HKL, so it will be A by 1 square plus 1 square root 2. So this is 2A by root 2 sin theta and lambda. So let's put the values.
1.54 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा भी एंगस्ट्रॉम में ले लेंगे. This is √2 equal to lambda. Lambda is 3.08. एक तरह से कट गया. So sin theta is what? 1 by √2. So theta is sin inverse 1 by √2 of 45 degree. I to do 45 degree simply. कुछ गलती हो गया लगता है, कुछ एरर हो गया है, एक बार चेक करो. Two DHKL sin theta equal to lambda. So DHKL is what? DHKL is a by √2. So twice into a by √2 sin theta equal to lambda. Lambda is what? Oh sorry, अभी आंसर मैच नहीं कर रहा था, उल्टा पुट कर दिया हमने. This will cancel out. So this is √2a and sorry, let's put the values also. A is 3.08 angstrom and lambda is 1.54. So this will cancel out. So your sin theta is 1 by 2 √2. So theta is sin inverse. ये नहीं होगा भाई, ये आंसर हो जाएगा. बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, मतलब वैल्यू ऐसा दिया, उसमें कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर जो था ना वो अलाउ नहीं था, तो वैल्यू कुछ ऐसा ही देते थे कि कैलकुलेटर का नीड ना पड़े. ठीक है, वैल्यू कुछ ऐसा ही देते थे कि कैलकुलेटर का नीड ना पड़े. कैलकुलेटर का नीड नहीं पड़ रहा है मतलब आपका आंसर सही आ रहा है. 12वां क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. The Boolean expression P plus P bar Q is what? Which logic yet? P plus P bar Q क्या है? P plus P bar Q. देखो एक चीज समझो, x plus yz is basically x plus y into x plus z. ये ध्यान रखना फार्मूला. तो अगर इसको यूज करोगे यहाँ पे तो क्या रहेगा? P plus P bar and P plus Q. And P plus P bar is what? If P is 1, P bar is 0. So 1 plus 0 is 1. If P is 0, P bar is 1. So 0 plus 1 is also 1. So it is simply P plus P bar is 1. So it is P plus Q. And P plus Q is what? AND gate. P plus Q is AND gate. अब P और Q दो इनपुट लीजिए, AND gate का आउटपुट P plus Q मिल जाएगा, है ना? PQ. This is P plus Q, and P plus Q is nothing but P plus P bar Q, right? P plus P bar Q. Okay. तेरहवां क्वेश्चन देखो. मैच करना है, टू मैच ग्रुप 1 विद ग्रुप 2. ये क्या है? देखिए, these are the field vibration in perpendicular direction. One is along x, other along y, and they differ by phase difference of pi by 2, and the amplitudes are different. मतलब it is basically here the plane here the wave is superposition of. Here the wave is superposition of two waves having field vibration, one along x, other along y, and those field vibration, the phases differ by pi by 2. So in general it is elliptically polarized, but if the amplitude is same, this is circularly polarized. So here what you find, the amplitudes are different, and the waves are the fields are they are the field vibration in perpendicular direction, and their phases differ by pi by 2. I can always write cos omega t plus pi by 2 as sine
So phases differ by pi by 2 and the fields are perpendicular to each other, fields are perpendicular to each other, so it is elliptically polarized. ये elliptically polarized हो जाएगा. यहाँ भी देखो phases differ by pi by 2 since you have sin and cos, but the amplitudes are same. So this will be circularly polarized. ठीक है. Here you see they are in phase. They are in phase. अगर आप डिस्टेंस फिगर बनाओगे ना ऐसे, तो इस केस में तो ऐसे बनेगा, इस केस में सर्कुलर बनेगा. ठीक है, ई एक्स ई वाई. बट इस केस में ये लाइन बनेगा. ई एक्स इज व्हाट? E1 sin omega t plus kz, which can be written as simply which is nothing but what? E1 by E2 into EY. So it is what? This is plane polarized with the field vector make an angle theta equals to tan inverse E2 by E1. So it's a plane polarized with the field vibrating along this. So it is linearly polarized, plane polarized, same thing. ठीक है. यहाँ देखिए phases differ by pi by 4. So again it is elliptically polarized. हालांकि वो elliptically polarized का जो फील्ड वेक्टर का जो टिप जो है वो इस तरह का ऑब्लिक एलिप्स पे ट्रेवल करेगा. The tip of the resultant field vector would be traveling on this kind of. So but in general it is elliptically polarized. If the phase difference is pi by 4, it is elliptically polarized. कौन सा मैच किया देखो, P का 4 और S का 4, P का 4, S का 4, Q का 2 और R का 1 है. हाँ, R का 1. ठीक है. So C is the correct answer. C is the correct answer. ठीक है. C is going to be the correct answer. Okay. क्या बोल रहा है ये? For a liquid to vapor phase transition at TTR, T transition temperature, which one of the following plot between specific gives free energy? See, gives free energy G is, see, specific gives free energy G is H minus Ts. So specific gives free energy would be gives free energy per unit mass और per unit volume, इस टाइप का कोई चीज होगा. per unit mass होना चाहिए ऐसा तो. ठीक है, तो specific gives free energy वो एक तरह से क्या हो जाएगा, मतलब वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी नहीं रह जाएगा. ठीक है. तो specific gives free energy would be gives free energy per unit mass probably और gives free energy per unit volume. मतलब कोई मैक्रो वेरिएबल से उसको डिवाइड कर दोगे तो वो इंट्रिंसिक क्वांटिटी हो जाता है, मतलब वो एक्सटेंसिव वेरिएबल हो जाता है एक तरह से. ठीक है, मतलब वो डजंट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, मास एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक डेंसिटी, राइट. बट इन जनरल it does depends on this. So if this is specific gives free energy, this is specific enthalpy, and this is specific entropy, right? So in general you see gives free energy is a continuous function of temperature, but then when there is a phase transition, this entropy part
will increase abruptly when you move from what liquid to vapor. जब लिक्विड से वेपर में जाते हैं तो अचानक से इंट्रोपी बढ़ जाएगा. जो अचानक से इंट्रोपी बढ़ जाएगा तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन ना इट फेल्स टू बी डेरिवेबल एट दिस पॉइंट. मतलब एकदम से कंटिन्यूसली ऐसे घट रहा था. एज यू इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स जी घटता जाएगा. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अचानक से इंट्रोपी में अब्रप्ट सा इंक्रीज हो जाएगा जब लिक्विड से गैस में जाएगा. सो इट विल फॉल, जो रेट ऑफ फॉल यहाँ था यहाँ पे फॉल रैपिड हो जाएगा. वाई? बिकॉज एस इंक्रीजेस रैपिडली, abruptly you can say. S increases abruptly when you move from liquid to gases. So it won't be like continuous kind of fall which you have over here. It would be fall, and then there is a rate of fall basically increases, right? Rate of fall increases. Why? Because S suits up, right? S suits up. ये सब तो गलत है. ठीक है? Okay, getting a point? So we have done this 14th. Now we are into last question. आज ये देखिए 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है. A segment of circular wire of radius r extending from 0 to pi by 2 carry a constant linear charge density lambda. The electric field at origin is okay. एक काम करो, ये तो हर मतलब फील्ड तो हर पार्ट पे फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा. एक काम है ऐसा किया जाए कि at theta let's take a element of this curve, element of this quadrant, d theta, and what will be this? This will be r d theta. So what will be the charge over here? dq. dq will be lambda into r d theta, and because of this dq the field will be in this direction. No, this is theta, this is theta. So this is dE. So in dE will be what? dE will be dq upon point चार्ज की तरह behave करेगा ना. We are taking infinitesimal element of this circular wire. So dq upon 4 pi r square. देखिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे then this will be dq into 4 pi epsilon naught r square, and this will be what? Cos theta minus I cap plus sin theta minus j cap, or dq is lambda r d theta or this will be cos theta I cap, right? So if I find energy, electric field, I can integrate component wise. So this would be lambda upon 4 pi epsilon naught r minus cos theta d theta I cap minus this, and theta goes from 0 to pi by 2. So this will be what? Lambda upon 4 pi epsilon naught r, and this will be minus sin theta 0 to pi by 2 I cap, and cos theta this, or the electric field will be simply lambda upon 4 pi epsilon r, and this will be what?
yeah, pi by 2, so this will be minus I cap and minus j cap. Lambda upon 4 pi epsilon naught r minus I cap minus j cap. A would be correct answer. A would be the correct answer. ठीक है? So we have done this, what, 2012 का पेपर हम लोगों ने कर लिया, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं, ठीक है. सो ये बाद में नेक्स्ट ईयर जो तैयारी करेंगे उनके लिए हम करवा देंगे बाद में, ठीक है. सो वी हैव डन 2012. नेक्स्ट वीडियो वी विल डू 2011. तो अब जल्दी जल्दी करके इसको फिनिश करते हैं 2-3 दिन में, ठीक है, 2005 तक. सो आवर टारगेट विल बी फिनिश्ड, हम लोग का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू 2011, ठीक है. टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.